ऑल राइट अच्छा आज हमें आरसी एनालिसिस एंड क्यू एन ए करवा आज सबुठ छोट छोट जितेटा पारिली आरसी जोटा पड़ी सब तीन छोट आरसी आनी ओके ओनली हैव 3 small RCs. Hardly it will take 20 minutes for us to solve. Okay, but that is not the reason why I have got the RC. Acha, mone thibo last class when we were doing RC, I explained to you line by line. Okay, kahin ki explain करतली ना मा गोटे कहते lateral thinking माने तमे जोटा पढ़ुचो सेटा लेखक like whoever has written what was his interpretation से काहे की लिखिला we should know कि से काहे की लिखिला so that we understand his context माने धरो तमे जनकू गोटे चिट्ठी लिखुचो से चिट्ठी रे तमे किछि लिखिचो सिए दे खाली तमे लिखिचो मते लागुची माने आगु को जाई टिके माने असुविधा हबो चिट्ठी लिखिचो जे पढुची सी देखा मत लगुच आगे जाए असुविधा हम सी पढ़ी सारा पर सी एयर भाविला जो असुविधा सी कह तुम मेसेजटा भूल गला कारण तुम कौन कह चाह आगु को लगुच असुविधा हम ता अर्थ यहाँ केत कह जाए जो तुम देखुच कि हाँ असुविधा हवा स्टार्ट है तुम फिल कर कि असुविधा हम से कह माने जी पढ़ुची तार मुंडे कौन आसा कथा कि बर्तमान से असुविधा अवस्थाटी पाखापाखि हो आसला सी यदि भाविला उल्टा कि जो असुविधा कह दैट इंटरप्रिटेशन इज रॉन्ग isn't it तो सही why the author is writing something what he is writing we will focus on that reason kahe ki hame focus kariba because if we see what the author has written what is the intention of the author what he is writing in smaller passages then it will be easier for us to interpret the entire passage if we get a bigger passage because generally तमने बड़ा passage ही पाइबो गोटे जोड़े छोटा छोटा passage पाइबो ओके तो हमरो मेन फोकस रहिबो जोड़िए क्वेश्चन हमें पचारिया से काहे की लिखुची आ एटी कोन कहया को चाहूची why has he written this and what he is trying to say ठीक अछि got it take your time मु क्वेश्चन पचारिबी मझरे मझरे if you can answer it is fine online be safe if you can answer it is fine if you cannot answer do not bluff करबनी बस कहबो मो इंटरप्रिटेशन हो एया डायरेक्टली कहबनी कि सर एया एटा हो एया नो मो इंटरप्रिटेशन हो एया मु काहे कहूची this is the language that you will be using when you get into the commission okay you will not say this is what that is what you will say in my interpretation in my opinion in my observation in my this is what I believe hele you have chances to rectify you have chances to debate you have chances to learn okay तो आज हमें तार ऊपर फोकस करिबा तो एटा जो फर्स्ट वन एटा कोन एमिदी हे गेला तो এটা ছোট হই পারিবনি কি এটা এটা গুঞ্চিয়া কথা ওকে ঠিক আছে ঠিক আছে read this first পড়ো then I think it is visible to all last ওয়ার্ডটা হচ্ছে problems one's approach to future problems है ना पढ़ो then we will discuss once you have done tell me
Clear? Done. Is there any word that you don't understand? Tell me first. We will discuss those words. Huh? Uh, mm, Third sentence. Oh, pitfall. Pitfall. Okay. How? Hmm? Could he before? Okay. One other. Uh, All the fifth line. Let's say 1, 2, 3, 4, 5. Oh, gut reaction. Hmm. How karo? Any other words? এটি হচ্ছে pitfall ଅଛି urge 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 কোড ଅଛି resisting the urge to make the decision on the spot কোডଥିଲା okay this the final decision trade off resisting the urge resisting the urge to settle on the first idea acha ठीक ଅଛି pitfall ଅଛି resisting urge ଅଛି very good ଆଉ କିଛି trade off very good ଗୋଟେ ଆଗ trade off କାର ମତେ ବାବା ତମେ ଏମିତି କହିଲେ ମୁଁ ଉପରୁ 6 ନା 6 from below 1 2 3 4 5 6 कौन जी ओ ट्रेड ऑफ्स अच्छा आओ फिजिबिलिटी आओ सिम्पटम कौन वाला सिम्पटम क्यों किए बुझ पानी वेरी गुड एक दो तीन symptoms आओ ट्रेड ऑफ फिजिबिलिटी बाप रे समस्त को सही गोटे डाउट बाबा ट्रेड ऑफ फिजिबिलिटी तो भाई तो मतलब काफी पॉपुलर डाउट आउ कौन जदि एते वर्ड बुझी पारि न ता माने जहाँ लिखा है सेटा तो बुझी न तो टिके टिके बुझो दैट इज इट पूरा बुझा दरकार नहीं कहा विषय डिस्कस करा होची यू कैन अंडरस्टैंड राइट का विषय डिस्कस करा होची बड़ा बड़ा वर्ड न मत ठीक ठाक डिसीजन मेकर विषय ना डिसीजन मेकिंग विषय डिसीजन मेकिंग विषय आ डिसीजन मेकर विषय डिस्कशन है कि है डिसीजन मेकर ऊपर टॉपिक नुह किंतु डिसीजन मेकर विषय डिस्कशन है ना नहीं तो लिसन केयरफुली ना मुझे कहली कि डिसीजन मेकर पाई टॉपिक टा अछि राइट सो डिसीजन मेकिंग ऊपर ए टॉपिक टा अछि आ डिसीजन मेकर विषय भी डिस्कस है कि से माने केमिति डिसीजन नियंती इज दिस क्लियर okay so what I understand my interpretation is the author is trying to discuss the journey from starting of a problem trying to solve based on reason based approach and finally when it's implemented a thorough review it is also implemented with a comma like that a thorough review is also crucial for effective and future perspective good सत्य प्रकाश पानी very good it's very good अच्छा एटा decision making ऊपर कहूची okay let me first talk about the words that you didn't understand okay pitfall अच्छा मते बस कहो what is the meaning of the word pit
pit word, what is the meaning of the word pit? Kind, সেটা হচ্ছে pity, PITTY, দয়া দেখাইবা, that is pity. What is pit? Okay, yes, hole, gato. Okay, pitfall is basically a hole where people fall. Pitfall. On the road we have a lot of not manholes, we have a lot of what, small pitfalls, not pitfalls also, like something that, anything that hampers the steady progress will be considered as a pitfall. से वाट टिके ध्यान से देखते पिट माने गात, फॉल माने पड़ जाती, तो गोटे गात जो पड़ जाती, बेसिकली गोटे गात. So a common pitfall is to rush towards a solution without fully understanding it. माने सबुठु बड़ मिस्टेक, एडी को pitfall टा को से सबुठु बड़ मिस्टेक भलिया कहूची. ओके, एटा तुम जानि थियो, बट द वर्ड टा तुम जानि पार नथियो, राइट? pitfall माने a difficulty, a difficult situation or a difficult thing that does not allow steady progress, है ना? अच्छा, symptoms, symptom अर्थ होची, अच्छा symptom अर्थ के कहिबो? लक्षण. यस, हां, symptom अर्थ होची लक्षण. तो किंतु एठी असला underlying issue which can lead to treating symptoms rather than the cause. What does it mean? It means that what is happening right now, I'm देखि मु exactly माने पढ़िनी पूराटा, किंतु एई पर्टिकुलर पॉइंट से कहूची कि धर तुमको ज्वर हेची, तो तुमको मेडिसिन देकी तम ज्वर टेम्परेचर टा कमे दउचंती, ज्वरटा को क्योर करू नाहंती. They are treating the symptom because high temperature is a result of a particular like virus or bacterial infection, right? So they are not treating the infection, they are only treating the high fever. Okay, so the symptom is fever, so they are treating that rather than the cause which has led to the thing. Urge, resisting the urge. अच्छा, resisting अर्थ बुझी पारलो? resisting अर्थ कौन? अपोज करिया, resist करिया, oppose करिया, or to force oneself from doing something, to force oneself or stop somebody from doing something, or to force oneself from doing something. So resisting the urge, urge माने इच्छा. Okay, so एट देखो, potential solution, resisting the urge to settle on the first idea. सेटल ऑन द फर्स्ट आइडिया माने कोन को जो फर्स्ट आइडिया जा आसला ताको इच्छा होतो माने एटा आसला माने तमे हम एटा तो हे गेला हम एटा ही वी विल सेटल ऑन दिस आइडिया. सो सेटा जो थिबो, दे आर रेजिस्टिंग दैट पर्टिकुलर अर्ज. नो, लेट अस डिस्कस रादर देन व्हाटएवर वी हैव कम एज द फर्स्ट आइडिया टू सेटल ऑन दैट. वी विल नॉट डू दैट, वी विल गो फॉर अ डिस्कशन. दैट्स व्हाट. फीजिबिलिटी, अच्छा माने देखो, they can evaluate each alternative based on a set of criteria. तो feasibility basically तो कौन सा होगा? criteria ही थी वो, right? Such as feasibility, potential impact and resource requirement. अच्छा, feasibility बुझी वाला, potential impact टा कौन? अच्छा, feasibility में बुझी भी, potential impact माने कौन? देखिए ऑनलाइन किए कहि परिबो पोटेंशियल इंपैक्ट रो अर्थ कोन? ए कॉन्टेक्स्ट एटा आउथर पढ़ो. देन दे इवैल्यूएट ईच अल्टरनेटिव बेस्ड ऑन अ सेट ऑफ क्राइटेरिया. तो पोटेंशियल इंपैक्ट निहाती गोटे प्रकार क्राइटेरिया थिबो, राइट? सेट ऑफ क्राइटेरिया सच एज feasibility, potential impact and resource requirement. अच्छा, resource requirement, at least tell me what is resource requirement? Requirement is दरकार, got it, but resource माने कौन?
अवेलेबल जो जिनस गुड़ा अच्छी रिसोर्स रो अर्थ कौन संबल नु कौन कौन लागिबो materials required kind of ठीक अछि materials भी चलिबो से कहूची कौन कौन ए प्रॉब्लम को सॉल्व करबा पई कौन कौन लागिबो कौन कौन दरकार पोटेंशियल इंपैक्ट यार जो डिसीजन डाउन तार प्रभाव ता कम पड़ियो पोटेंशियल इंपैक्ट माने आगु को जाई कि कौन प्रभाव पड़ियो खाली इंपैक्ट होची प्रभाव कम पड़ियो पोटेंशियल इंपैक्ट ठीक जहा कहूची दैट मींस what will happen in near future if this decision is taken हैला तबरे feasibility अर्थ होची will it work माने हेई पारिबो कि नो how feasible is it going to work or not हैला if it is going to work that we will consider as feasible if it is not going to work we will not consider that to be feasible okay feasible काम करिवो की will it work so second gochi set of criteria such as will it work what will happen in near future what will be the impact of this decision in the near future and what are the requirements to take this decision or to fulfill this decision jodi sei patibo ठीक अछि this step often requires a careful analysis of trade-offs it generally I use करने but in business we use trade-off रो अर्थ होची गोटे माने इस हाथ ले उस हाथ दे जो जिनसटा माने मु तुमको गोटे जिनस देबी तमे मते गोटे जिनस दबो बाटा सिस्टम जोटा को आमे आगरो कहलो किंतु सेटा कोन you give me something useful I give you something useful that is barter system trade-off माने either मु एटा को खराब करबी न लाइक सेटा को खराब करी within two unwanted things that I require I'll have to choose कि मु तुमको एटा दे दी तुम मते एटा दे दो so I will choose which is less bad for me तो सेटा होची ट्रेड ऑफ माने मु किछि जिंस हटेबी आ किछि जिंस रखिबी किमा किछि जिंस होटल तार जो ता अगेंस्ट जो जिंस मु पाइबी सेटा भी किछि भलो नथिबो से भी एते भलो नथिबो तार भी रिजल्ट खराब ही होबो किंतु एटा लेस इंपैक्ट पकेबो तो सेटा होची ट्रेड ऑफ्स ओके foundation should be a reason choice not pick gut reaction अच्छा gut रो अर्थ कोन gut reaction अर्थ होची intuition ओके gut reaction अर्थ होची intuition gut रो अर्थ कोन गोटे gut feeling कोन देनी हमा सुदृढ़ ना अच्छा ठीक अछि gut ठीक अछि सुदृढ़ भी ठीक ही अछि कि gut रो अर्थ द वर्ड gut what does it mean that the word gut पेट उतर थाए जोटा कोन देबू कोन इंटेस्टाइन राइट gut feeling कोन दे मते लागु छि गोटे कोन होबो so that is gut reaction माने तुम माने भितरुडे फीलिंग आसे भाई let's do this so that is gut reaction something close to gut feeling माने मते लागु छि कि छोटा होबो gut feeling intuition जोटा को एटा gut reaction आउ किछि अछि except this अच्छा gut ता brave संगे इक्वेट हुए एटे लिखि चंदी कि सत्य प्रकाश लिखि चंदी gut ता को हमें अच्छा और को अच्छा अच्छा गट ता इक्वेट हुए ब्रेव संगे माने तमे गट्सी कहबा GUTSY गट्सी कहबा ता माने होची ब्रेव गट रो एक्चुअल अर्थ होची जोटा इंटेस्टाइन अछि किंतु सेटा भी हम यूज करू एज अ फ्रेज की कोन यूज करू सेते बेले हमें इट इज इक्वेटेड विथ ब्रेवनेस और ब्रेवरी तमे देखबो ही इज वेरी गट्सी ता माने से बहुत ब्रेव हैला किबा ही इज वेरी गटफुल means again he is willing to take risk हैला तो yes gut को हमें equate करि परिबा brave संगे but gut is not always equal to being brave हैला से जो brave कहते हुए हमें तो gut न कहि guts कहू he has got guts सेटा बेले सेटा होची सबले brave खाली word GUT is not always brave
intestine or brief gut टा है but guts is always brief ठीक है all right so let's try and understand से कहाँ कही now my question will be समझे पढ़िलो you all understood what the meanings are now I will ask you questions based on if I have anything to ask. Effective problem solving and decision making are crucial skill for navigating life's challenge, both personal and professional. Why is it saying it is a crucial skill? कि effective problem solving and decision making are crucial skill for navigating life's challenge, both personal and professional. Why is it considering that problem solving and decision making are crucial skill to navigate life's challenges? Navigate life's challenges means to deal navigation authority to find direction, but here it would mean to deal with the problems that is coming in our life. We need to have effective problem solving and decision making skills, and why, and it is saying it is crucial. Now the question arrives, why is the author saying it is crucial? सेटा ठीक अच्छी कि सब भाविक डिसीजन नवा पड़ो कि से तो कौन जो सब भावी जो डिसीजन नब से बहुत क्रुशियल बहुत इंपोर्टेंट कहीं तमें यस यू आर सेइंग इट मेक्स इट इजियर फॉर अस इन द फ्यूचर तमें जो ठी स्टॉप कलो तार रीजन ता परठ व्हाट इज इट ओके स्मारक त्रिपाठी इमोशनल रिएक्शन ओके गुड तो कौन है mostly damage. Why it is crucial? Because if you have proper decision making, you have made a proper decision and you have proper problem solving skills, things will not be bad in future, things will be easy in future. It is not saying things will be good in future, it is not saying things will be good in future, it is saying it is crucial, means it is important that you should have problem solving and decision making skill for things to go smooth, not very good है याको भलो हबो बोली न ठीक ठाक रहिबो. That is the intention over here. Got it? All right. Both personal and professional. If you want your personal life and professional life to go okay, good, then you should have problem solving and decision making skill, and it should be effective. You should know it properly. The process is not a linear but rather a cycle that often begin with clearly defining the problem. Acha. The process of what? The process of decision making, not I mean effective no call chalibo, but for now the process of decision making and problem solving is not linear but rather a cycle that often begins with clearly defining the problem. Ortho no मत ठीक अच्छे मत यही वर्ड बुझाओ. is not a linear one है it is one word है LINEAR linear one. से कहूँ the process is not a linear one but rather a cycle that often begins with clearly defining the problem. कौन सी टाइप linear one रो अर्थ कौन और cycle रो अर्थ कौन? cycle रो अर्थ yes बाबा सेटा होची मैथ्स रे आमे मनीष मुंड रे पसचे मनीष मुंड रे कुआडे आसीबो सर्कुलर मोशन एमिति एमिति छडाउ नहीं सी तो पड़ेला बुढ़ भितर को. कलेक्टिव डिसीजन इज
crowded decision made by a crowd. Okay, ସେଇଟା କହୁନି, ସେ କହୁଛି the process is not a linear one but rather a cycle, ମାନେ the process is cycle. अच्छा, circular motion जोड़ा कହୁଛ, circular process, हाँ, circular process माने कौन? What do you mean by circular process when we are referring as human beings? अच्छा, let us talk about a cycle. What is a cycle? Cycle कोटा? अच्छा, ना से एते उपरु भावन मु सिंपली गोटे क्वेश्चन पचारली, व्हाट इज साइकिल? तमे साइकिल चले जानिछ? तमे साइकिल चले जानि न, तमे बाइसाइकिल चले जानिछ? तमे साइकिल न, तमे बाइसाइकिल चले जानिछ किबा मोनोसाइकिल चले जानिछ? जदि गोटे चक्कर तमे गोटे चक्कर जोटा जो जोकर माने सब करंती से जो सर्कस रे सेटा जो मोनोसाइकिल, आ तम माने जोटा चलाउछ सेटा नॉट स्मारक त्रिपाठी लिखिछि द प्रोसेस इज नॉट स्ट्रेट और डायरेक्ट लीनियर वन. वेरी गुड. तो साइकिल तमे माने आम भीतर केही एटलीस्ट मु तो सिखिनी साइकिल चलया, मु सिखिछि बाइसाइकिल चलया. बाई माने टू, साइकिल माने चलला मैथमेटिक्स, चलला तुम साइंस. अरे मनीष विषय मोटे मनीष कहीं हठात कंटिन्यूस विषय तमें भावुच तुम जो तुम माने निज निज कथबार्ता हो तो तुम एमती कथा हो तो भाई जीवनटा बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गलानी, जीवनटारे केते कोन आस्ची जाउची एमती कथा हो? नॉर्मल कथा हो जोटी केमती कथा? आलो माँ, जोटा को आमे चक कहू सेटा होची साइकिल. The cycle is this: when something starts from a point and after some time it comes back to the same point, it is called one cycle. So तुम जो चक्करटा कहूछ, that is a cycle. When you paddle, it completes one cycle, and there are two wheels that complete the one cycle. That is why it is called bicycle. ହେଲା एते भाबितलो 3-4 हजार टंका बाइसाइकेल गोटे कि आजिकल मिल जाऊ ना अधिक अच्छी किण बॉडी विल बी गुड, एमती हेनी है. सो दैट इज अ बाइसाइकेल. सो सी कहूँ कि प्रोसेस इज नॉट लीनियर. लीनियर देखो LINEAR है, तुम खाली एति काटिदेल कौन लगे line. So this is linear and this is cyclic. The process of decision making is not direct. जेमते तुम सांग इलेक्शन दी स्मारकी इलेक्शन दी, the process is not straight or direct, linear one. माने the process माने जदि हमें decision making करूचे आमे A to A point रो आसकी A point रे पहुंचे, that is not decision making. माने मते गोटे प्रॉब्लम अछि, मते मो गोटे सॉल्यूशन पहुंचे, that is not decision making, that is not problem solving. माने one point to another नो. से कहूची एटा सबले साइक्लिक. माने तो प्रथम देखियो कोन प्रॉब्लम अछि, पुणी ताको सॉल्व करियो, पुणी सेटा देखियो कोन किछि भूल रहि गेला कि पुणी ताको बसी देखियो, धीरे धीरे you will solve a problem. It's a cyclic process. जोटा की स्टार्ट हुए डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, ता अर्थ साइक्लिक प्रोसेस व्हिच स्टार्ट्स फ्रॉम डिफाइनिंग द प्रॉब्लम. माने फर्स्ट जानिबा उचित कि प्रॉब्लम कोन, एक्चुअल प्रॉब्लम कोन. फर्स्ट तमे प्रॉब्लम दा जानिले तापर तमे ताकू स्लोली रिमूव कर परिबो. जेमिति one good example that I can take is, let's say you are facing problem in a particular subject that you are studying right now. Okay, so what is your solution? Your solution is, there are two ways you'll deal. Let's say mathematics, everybody faces problem, even I faced problem, everybody faces problem in mathematics. So let's say if I would have solved it like this, I am not able to solve quadratic equation. So my solution is, I will solve quadratic equation, I will solve this.
I solve 100 and then it is done. I will believe that I have solved quadratic equation. So हेटा करिछि माने किछ ना किछ तो सिखिथिबि. That is a linear approach. But when I am but if I start solving number one question and I check, is it right or is it wrong? Acha, this is wrong. Why it is wrong? Because I made this mistake. Then I start solving the second one. Why there is a mistake? Because I made this mistake. Then I start solving the third one, where I rectify both the mistakes and I get it correct. Third one. Then I go to the fourth one and I again get it wrong because there is a new problem coming over here. So after two I get the third one correct, after third the fourth one is incorrect, then the fifth one is correct, then the sixth one is correct, then seventh one will again be incorrect because there will be a new problem. So always problem solving and decision making is a cyclic process where we rectify our mistakes over and over again in order to achieve perfection. Say jinsata ku se kahuchi. Have you ever tried this approach? Samasten ku seya kariba kotha. But the thing is that we have been taught, jaha mu bhabuchi, that we all have been taught कि तमे यदि गुड़े प्रॉब्लम एक संगे सॉल्व कर दो किछि ना किछि तो गोटे सिखि जाइथिबो. That is wrong. You should not learn किछि ना किछि. You should learn what is wrong, what is right. Okay, तमे जहा भी सिखिबो कोटा ठीक कोटा भूल सेटा ही सिखिबो. कोटा ठीक कोटा भूल एते खंडे करी कि किछ तो किछ होय जो ना किछ तो किछ नो गेस वर्क्स हैला. Okay, now a common pitfall is to rush towards a solution without fully understanding the underlying issue, which can lead to treating symptoms rather than cause. एटा होची as an example देला कहार ए linear method रा example टा देला कि गोटे सबुठु बड़ mistake से कहूची. So one of the common mistake, बड़ no sorry मु भूल कहली, बड़ no, one of the common mistake. What is the common mistake is आम सॉल्यूशन वर्ड दौड़िबा, we will run towards the solution without understanding the problem कौन हैला. माने धरो तमे देखले गोटे पिलाटे कांदुची तमे फटाक किने ताको खुआई देलो हैला. That is running towards the solution. Okay, without understanding से कांदुची काहे की अरे देखो भोको न आउ कोन होई थाई पारे ता तो देखो पिंपुडी कामड़ दे थाई पारे सेटा देखो हैला. That is wrong. Is it the right approach? Do you have kids? Would you have done that? Nah, right. A mother understands. So simple thing. So that is a common mistake. A common mistake kono ki without understanding what actually is the problem, we rush towards the solution. Amugo jaha asla ame will rush towards the solution, which can lead to treating symptom rather than cause. माने सेतरे हेई थाई पर तम ताको खाय को दे देला को पिलाटा मे भी शांत हो जाय पारे किंतु मे भी ता पर भी ताको से पिंपुटा कामुड़ थाई पारे पर से पुणे औथर कांदिबो. Right, got it? So that is what symptoms rather than cause. Once the problem is defined, माने प्रथमे if you have understood कि भाई problem टा कोन, effective decision makers ए देखो ए असला decision making जो माने करंती, effective decision makers generate multiple potential solution. माने they go into cycle. माने गोटे प्रॉब्लम आसला तमे फर्स्ट कहूची पिलाटा कांदुची, सो तमे तारा मल्टीपल प्रोबेबल आंसर्स बाहर कर काहे की भूख लगते पारे कि ताको गोटे पिंपुडी कामड़ दे थाई पारे कि ताको माने आउ कोन भी थाई पारे कि ताको गिगी लागुथो सदी को जो कोनती ताको से लागुथो से भी सेत तो किन ताको अजंतर लागुथो बांती लागुथो कोन केते छोट पिला को केते कोन अछि सब गुडा सागर भाबी what is the solution? Resisting the urge to settle on the first idea. माने पूर्ण linear जीवनी तो मन को फर्स्ट आस पिला तम हमर समस्त पिलाटा कांचन तो कहथो फर्स्ट दिन से मन गस ना से माने फर्स्ट दिन जो मन गस ता ऊपर सेटल करिवेनी से माने मल्टीपल आंसर्स तार खोजिबे एंड देन दे विल ट्राई एंड फाइंड एन आंसर मैं सब गुडा चेक करी कि तापर सॉल्व करिवे. They then evaluate each alternative based on the set of criteria such as feasible. मतलब please यही पार्ट टा खाली बुझाओ.
They then evaluate each alternative based on a set of criteria such as feasibility, potential impact and resources requirement. এই তো এটাই বুঝলো এর অর্থ কোন এবে তো বুঝি গেল right now you have understood. Now tell me what does this particular sentence mean? এটা ঠিক কହୁଛ কিন্তু ବହୁତ জেনেরিক ହେଇ ଯାଉଛି তুমি ଯୋଉଟା କହୁଛ ঠিক କହୁଛ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଜେନେରିକ ହେଇଯାଉଛି ଆମର ମାନେ ସ୍ପେସିଫିକ ଦରକାର ଆମର ଗୋଟେ ପ୍ୟାରାଗ୍ରାଫ ଏଇ ପ୍ୟାରାଗ୍ରାଫ ହିସାବରେ ସେ କଣ କହୁଛି ତମେ ଗୋଟିଏ ଦେଖିଲ ମା ତିନିଟା ଯାକ ଦେଖିବାର ଥିଲା feasible ठीक है मु जो एग्जांपल आपन देथिली जो पिला कांदुची तार सही एग्जांपल ऊपर ए सेंटेंस टा बुझेलो I understand that गोटे कथा मु क्लियर कि तुम मैंने साइक्लिक और लीनियर थिंकिंग प्रोसेस बुझी जाइछो दैट्स वेरी गुड किंतु मु तुमको कोन पचारली और तुम कोन आंसर दोचो मु तुम पचारली मु जो एग्जांपल देथिली पिला कांदुची सेही एग्जांपल को बेस करके ए लाइन टा को बुझाओ they then evaluate each alternative based on a set of criteria such as feasibility, potential impact and resources requirement मतलब अच्छा एटलीस्ट एतिक तक हुआ कि दे देन इवैल्यूएट ईच अल्टरनेटिव काहार अल्टरनेटिव की अल्टरनेटिव विषय से कथा होची मा लिनियर अल्टरनेटिव या मा खाली वर्ड संगे वर्ड जोड़ी देले तार के अर्थ बाहर नहीं मा लिनियर अल्टरनेटिव माने अच्छा लिनियर माने बुझिलो कि खराब बेली मामा नहीं नहीं तमे जोड़ा कहूछो मे भी ठीक क्लियरली कहबो न आ ये बुझियो मारुति त्रिपाठी लिखचंती I think it's basically based on the potential effect possible outcome of what alternative solution of what I mean देखिया गले समस्ते बुझीच I think समस्ते बुझीच but you are not able to say it कारण सेठी भी जा लिखचंती से भी ठीक तमे जा कहउछ मा से भी ठीक आ तुम जहाँ कह से खाली गोटे वर्ड तुम भूल कर लिनियर थॉट सेटा भूल बाकी तुम जो बुझो सेटा ठीक मु कहूची कि एई जो अछि दे देन इवैल्यूएट अच्छा मते खाली देखो हु इवैल्यूएट की इवैल्यूएट करछि डिसीजन मेकर इवैल्यूएट करूची ईच अल्टरनेटिव प्रत्येक अल्टरनेटिव विषय कथा होची प्रॉब्लम रो अल्टरनेटिव सॉल्यूशन जो मल्टीपल पोटेंशियल सॉल्यूशन तांका पाके मल्टीपल पोटेंशियल सॉल्यूशन अछि से कहूची कि तापर से माने प्रत्येक पोटेंशियल सॉल्यूशन को
प्रत्येक पोटेंशियल सॉल्यूशन को से माने इवैल्यूएट करंती बेस्ड ऑन कहा परे फर्स्ट होची फिजिबिलिटी पॉसिबल पॉसिबल माने हेई परिबो माने पॉसिबिलिटी अछि कि नै यार फिजिबल ए जिंसर होबार चांसेस कोन माने सेई पिलाटी कांदुची पिलाटी कांदियार कारण कोन कोन हेई पारे सेटा होची फिजिबिलिटी पोटेंशियल इंपैक्ट मु एटा को माने जो ए जो सॉल्यूशन मु बाहर कली ना ना सॉरी एठी हबो पिलाडे कांदुची तार जो सॉल्यूशन बाहर कली आइदर तक भोक लगी थाई पारे आइदर पिंपुडी कामड़ दे थाई पारे ताको आउ कोन हेई थाई पारे ए सुजिन देली या बितु सबुटु लाइकली कोन सबुटु बेसी फिजिबल कोन ता माने तमे सेतो भाबिबो कि अच्छा मु तो ताको एई टाइम रे खाया देथि ताको तो जल्दी भोक लगी न थाई पारे एटा होची फिजिबिलिटी हैला द्वितीय होची अच्छा सी सेठी बसची भोक नय कि काळे पिंपुडी कामड़ दे थाई पारे सेटा इज फिजिबल ए जो भाबियाटा कि कोन हेई थाई पारे मोस्ट लाइकली सॉल्यूशन सेटा इज फिजिबिलिटी तापरे पोटेंशियल इंपैक्ट तार इंपैक्ट कोन हबो मु कले कोन हबो एया कले कोन हबो से कले कोन हबो आ से जिंसटा करिया को मो पाखे कोन कोन अछि जदी मु मते लागुची कि सीए पिलाटी सेठी जोडी बसे सेठी पिंपुडी कामड़ दे थाई पारे तार पोटेंशियल इंपैक्ट कोन मु ताकू नै आसी उचित तार रिक्वायरमेंट कोन रिसोर्स रिक्वायरमेंट कोन किछि नै निजे थाई कि नै आसो आई एम द रिसोर्स तापे कोन दरकार एई गुटा को से कहूची प्रत्येक जो सॉल्यूशन से बाहर करचंती से ताकू इवैल्यूएट कोन करचंती ता एई सॉल्यूशन माने एई प्रॉब्लम तार एई जो प्रॉब्लम अछि तार होबार एई एनवायरनमेंट ऊपर तार केते परसेंट चांस होत कि एई जोगु ही हेई थाई परियो जदि एई जोगु हेथिबो ताले तार इंपैक्ट कोन होउची आ जदि से इंपैक्ट अछि से प्रॉब्लम सॉल्व करिया को रिसोर्स कोन दरकार केमिति सॉल्व करिवि कोन सॉल्व करी कोन हेई थाई पारे से ऊपर बेस करी कि से माने डिसीजन नौचंती किंबा से माने प्रॉब्लम सॉल्व करचंती ओके आ किछ अछि के किछ कहले कि प्रॉब्लम नो सॉल्यूशन करेक्ट सॉल्यूशन थिला प्रॉब्लम नथिला This step often requires a careful analysis of trade-offs रे एठी अर्थ कोन पड़िबो एबे या हिसाब trade-offs रो अर्थ कोन या trade-off अर्थ होची माने तुमको भाबिया पड़ो एटा हे थाई परिबो कि म सेटा हे थाई परिबो मे बी दिस इज व्हाट हैज हैपेंड एई सिचुएशन ने कोन हे थाई पारे ट्रेड ऑफ माने एटा हेई नथिबो सेटा हेई नथिबो एटा हेइथिबो ए जो ट्रेड ऑफ्स कोन एडा कोन ट्रेड ऑफ्स माने तमे तो एलिमिनेट कर दोछो ए अल्टरनेट माने एई सॉल्यूशन ता माने ए अल्टरनेट हेई नथिबो से अल्टरनेट हेई नथिबो ए समय रे एटा होबार चांसेस नाही एडा कहउछनी ट्रेड ऑफ माने व्हाट इज अनवांटेड इन सोडा को तमे रिमूव करछो ट्रेड ऑफ्स द फाइनल डिसीजन शुड बी रीजनड चॉइस माने जस्टिफाइड जहार रीजन थिबो जहार रैशनैलिटी थिबो कि जेहेतु एया हेइची ता सेथि पय हमें या डिसीजन नउचे सेटा हो रीजनिंग तो पढुथु ना तुम माने तार केनता है तार थाए कोन प्रॉब्लम स्टेटमेंट तापर इफेक्ट स्टेटमेंट जेहेतु तमरो एई प्रॉब्लम अछि तार गोटे पर्टिकुलर इफेक्ट थिबो सही जिंस रीजनड चॉइस तमे जो डिसीजन नउचो सेटा गोटे रीजन माने लॉजिकल थिबो नॉट अ क्विक गट रिएक्शन माने मते फील होची बोली एटा ही आंसर दिबो नुहो तार कोन से प्रकार रीजन थिबो रीजनेबल लॉजिकल डिसीजन थिबो पोस्ट इंप्लीमेंटेशन the process concludes with a crucial review of the results to understand the effectiveness of the chosen solution या अर्थ कोन हमने भी चिड़ी होथो सर लाइन बाय लाइन खाली बुझौ जंती कोन दरकार 2 मिनिट तो बुझी गेला ना किंतु देखो तमे तले ओवरऑल पढुथिलो सेम जिंस रे कोन इंपैक्ट थिला जेतले तमे लाइन बाय लाइन पढुचो बुझिया को चेष्टा करचो से केते डीप इसे लिखिची ओवरऑली हमर गोटे अभ्यास हे जाईची तमर कोन मु भी अन्य माने भी देखुची ओवरऑली देखि की तार गोटे ऊपर ऊपर गोटे डिसीजन नै जिबा माने ऊपर ऊपर गोटे जानि जिबा को समस्त कर इच्छा हां हे गला हां हे जिवो तो हबनी कोन एमती तो हुए एई सब जिंस होला प्राय लोक पिलांकर मु देखिची सेटा ओवरऑल काम पई ठीक किंतु तममानक काम पई न तममानक पई
accurate proper information दरकार माने जहाँ लिखा है ची सेटा properly बुझुथिबो जेतोले हैला आ इधर भी थिंकिंग प्रोसेस भी बढ़े देखो तमे आगुरु केमिति भाबुतला गोटे छोट ई भाषाटा केमिति एबे तुम थिंकिंग प्रोसेस केमिति चेंज हेथिबो निहाती तमे भाबुतो एमति तो कले हमर भी हे जियो ना सॉल्व ए जो जिंसटा हैला तो ठीक अछि post implementation the process concludes with crucial review of the results to understand the effectiveness of the chosen solution ता अर्थ कोन सेम भूल रिपीट न हबो मा एटा कोथि में लेक्चर सुनीता तुम लेक्चर सेम भूल रिपीट न हबो एटा कोथि में लेक्चर अच्छा पोस्ट इंप्लीमेंटेशन माने कोन माने सॉल्यूशन माने प्रॉब्लम टा सॉल्व करि साला परे पोस्ट इंप्लीमेंटेशन अर्थ होसे कि प्रॉब्लम टा माने सॉल्व करि साला परे से कोन करछि द प्रोसेस कंक्लूड्स माने सेते बेले भी डिसीजन मेकिंग कंक्लूड हेइनी इंप्लीमेंटेशन पर भी डिसीजन मेकिंग कंप्लीट हेइनी बोली से कहूछि the process concludes with crucial review of the result to understand the effectiveness of the chosen solution माने से कहूछि क्वेश्चन हां से कहूछि प्रॉब्लम केते बेले माने डिसीजन मेकिंग टा कंप्लीट हो आफ्टर यू हैव फाउंड आउट द सॉल्यूशन तापर देखियो जो रिजल्ट से प्रोड्यूस कला से रिजल्ट केते इफेक्टिव थिला तार मापियार सब थिबो टाइम थाई पारे कहार अमाउंट थाई पारे अलग अलग गज थिबो समस्त अलग थाए तो इन आवर केस हम जो एग्जांपल होते पिलाटे कांदुची तार इफेक्टिवनेस केमति जानिबो तमे गलो ताको उठे आनलो संग संग पिलाटा जे चुप हेगला जानलो हां इफेक्टिव तमे गलो उठे आनलो तथा पिलाटा कांदुची माने से एते इफेक्टिव नुहो हला से थरु जाना पड़ियो कि अंडरस्टैंड द इफेक्टिवनेस ऑफ द चोजन सॉल्यूशन तुम जो सॉल्यूशन चूज करिछो सेटा ठीक कि भूल तुम रिजल्ट रु ही तुम जानि परिबो तमे से पर्यंत भी से कहूची डिसीजन मेकिंग सॉरी नी The reflective step is vital for learning and refining one's approach to future. एटा होची एटा प्राय सब समस्ते लाइफ रे करिया उचित किंतु केही करंतनी से कोन कहूची the reflective step is vital for learning and refining one's approach to future problem. reflective step कोटा the reflective step कोटा review correct जो रिव्यू टा कला एठी ए रिव्यू टा से कुछ रिफ्लेक्टिव स्टेप माने तम माने जहा कलो लास्ट को जहा इंप्लीमेंटेशन देखिलो केते इफेक्टिव रहिला ताकू देखिबा ही होची रिफ्लेक्टिव स्टेप से कुछ सेटा कले आगु को से बेला यदि सेमिति भूल जेमति न हुए सेटा तमे इंश्योर करि परिबो से भले भूल न होए आउ प्लस से लर्निंग एंड रिफाइनिंग वन्स अप्रोच माने तमे भूल बाट माने सॉल्व करिवा पूर्व तमे सॉल्व टाकू माने प्रॉब्लम टाकू एडै देई परिबो ओके वन आई कांट रिमेंबर के कहितला बट द बेस्ट वे टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इज टू अवॉइड फ्रॉम द प्रॉब्लम बीइंग प्रॉब्लम हैपनिंग माने से को तांको कहया कथा कि गोटे प्रॉब्लम को सॉल्व करबार सबुटो बेस्ट ये तरीका होची कि प्रॉब्लम हला हबा को दबनी आई थिंक इट हां प्रॉब्लम हला पूर्व ही ताको सॉल्व कर दो कि अवॉइड कर दो आई थिंक द आर्ट ऑफ वॉर के लिखले सैनजू आर्ट ऑफ वॉर आर्ट ऑफ लिविंग नो आर्ट ऑफ लिविंग हमर एठी ये पढो से आर्ट ऑफ वॉर पढिछो आर्ट ऑफ वॉर पढ़ियो एटा होमवर्क आर्ट ऑफ वॉर कोठु खोजी के मु जानि ने आर्ट ऑफ वॉर आनि के मत पढिबो ऑनलाइन समस्त मु कहूची एड ऑफलाइन समस्त मु कहूची आर्ट ऑफ वॉर हैला आर्ट ऑफ वॉर एटा कोठु आनि के पढुचो केमिति आनि के पढुचो ऑनलाइन पढुचो बही रे पढुचो कोमति पढुचो पढियो किंतु पढिबो हैला मु जदि सॉफ्ट कॉपी पाइली सारंग संगे शेयर कर देबी ताले से अच्छा मोबाइल सॉफ्ट कॉपी अछि मोबाइल सॉफ्ट कॉपी अछि मु सारंग से शेयर कर तुम सारंग टू नहीं जीवो हैला तुम जो ग्रुप के सेठी पके देबे किंतु आर्ट ऑफ वॉर पढिबो ओडे भलो बही तुम
it is not about war. It is not about war. माने मारपीट पाई माने युद्ध पाई नुह. आर्ट ऑफ वार पढ़िले तुम जानिबो कि प्रॉब्लम आसिया पूर्व केमिति सॉल्व करा हबो, केमिति माने प्रॉब्लम जदि बेसी हला केमिति, प्रॉब्लम कम हेले केमिति के माने केमिति युद्धटे जितिया कथा. माने युद्ध माने तमर आम लाइफ रे जहा प्रॉब्लम चली छि से लाइफ प्रॉब्लम रे केमिति जितिया कथा. एटा होछि आर्ट ऑफ वार. से लिखिथिले, सी जे लिखिले सैंजू, से चाइनीज थिले, बहुत बड़ मार्शल थिले, तांगर माने सेनापति थिले. से लिखिथिले, से प्रकृत लिखिथिले कि युद्ध हेले केमिति जितिबो. किंतु एबे लोक ताकू बिजनेस फील्ड रे, काम फील्ड रे सेटा इंप्लीमेंट करछन. कारण आजिकली काम और बिजनेस होछि गोटे प्रकार युद्ध. से सेठी केमिति ताकू करछन. एबे तो समस्त आर्ट ऑफ वार, चाणक्य नीति सब गुडा इंप्लीमेंट करछन. तम मानन को भी से सब विषय जानिया को पड़िबो. तमे हठात कोडी जाई कथा हो तो सेठी से भाई चाणक्य नीति विषय टिके जानिचो कि कहिचो कि. कारण एडा सब आजिकली चालुची. सेही बेले थॉट प्रोसेस समस्त करो. चाणक्य नीति विषय की जानिचो? अच्छा एडे ऑनलाइन की चाणक्य नीति विषय की जानिची? चाणक्य नीति, चाणक्य किए? ए जो भाईना जी छुट्टी जांग तिथला से जो बोलथले सिए किए? चाणक्य किए? हाँ सेती मौर्यन एम्पायर भाई आउ सांग एडवाइजर थिले भाई. चाणक्य ने जो मुंड पिटी देबे. हो ठीक अछि. एडवाइजर नथिले भाई, सी तांको गुरु थिले. गोटे लोक गोटे लोक हैला. सी सब कौटिल्य, हाँ कौटिल्य अर्थशास्त्र रचयिता. हाँ कौटिल्य अर्थशास्त्र रचयिता. कौटिल्य नथिला से कुटिल मुनिंकर से पुओ बोली कौटिल्य कह जाउतला, किंतु से होचंदी चाणक्य हैला. ठीक अछि. चंद्रगुप्त गुरु. हौ ठीक कथा. स्मारकी मा तुम तो सब जानिछो. हाँ वेरी गुड. ठीक अछि. तो चाणक्य नीति टिके पढ़ो. चाणक्य नीति पढ़िले, अच्छा सुनो, चाणक्य नीति पढ़ियो मुंड खोला रखिकी. से कौन लिखिछि भाबिकी पढ़ियोनी, भाबियोनी कि पढ़ियो से कौन लिखि देछि कि कौन करियो सेंति नो. चाणक्य नीति रे बहुत जिंस लिखा है जोटा तुम लगे हे एडा तो भूल कथा, एडा एमति करिया कथा न, एडा एमति न. स्पेशली झियो पिलांग विषय रे तो लिखा है. हाँ ए सोशल मीडिया भीतर पसिबनी. निजर गोटे बुद्धि अछि. झियो पिला माने तमर भी गोटे बुद्धि अछि, पुओ पिला माने गोटे बुद्धि अछि. बुद्धि निज बुद्धि. सोशल मीडिया फेसबुक आ गोटे कोन सेटा इंस्टाग्राम बुद्धि नो. कारण इंस्टाग्राम रे आम कोन ना कृष्ण एमिति एमिति कथा कहउचंती, जीवन में कृष्ण भी केबे कहि नथिबे. तो गौतम बुद्ध भी कौन कौन मत कह पढ़ाऊँ ये मुझे जान नी गौतम बुद्ध को पढ़ुनी. आ बेले बेले तो मुझे देखी आइनस्टाइन भी आसी गौतम बुद्ध कथा कही पढ़ाती. नहीं नहीं से नुह, से कोट फोट सब लिखाई न थे. गौतम बुद्ध कहले कि सब देखा आइनस्टाइन कोटा. कर्म कर फल की चिंता मत कर, यही जो कथाटा है कर्म कर फलर चिंता कर नहीं, यही जो कथाटा जो कृष्ण कही से कम भाभी कही जी गीता पढ़ी से ठीक बुझियो. किंतु आमर एटी कर्म कर फल चिंता मत कर. कृष्ण या कहते से कही कही केते कौन कही तुमको किए कह तुम देख पढ़ कंटेक्स्ट जाओ. अच्छा मत गोटे कथा कहल, कृष्ण केबे कही इंस्टाग्राम में पढ़ी तुमने भी पढ़ी थी. कृष्ण कही कि जी दुर्बल ता उपरे तमे अत्याचार कर नहीं. कोट लिखा है. कारण कृष्ण ए सब विषय रे चिंता करंतिनी. कारण से तांको टाइम रे दुर्बल बेले कहीं नथिले. समस्तंकर निजर आत्मसम्मान थिला, समस्तंकर निजर आत्मज्ञान थिला. दुर्बल नुह, से मैंने कम पराक्रमी
बेसी पराक्रमी से रूल थाए कि कौन सी लोक जहाँ पाखे जो कौन योद्धा जहाँ पाखे खंडा नथियो तुम निहत्ता को मत मारो से गोटा हूँ ये सेटा होतला तांको रूल दुर्बल दुर्बल कहे पड़ेगा है थरे कृष्ण आसिक इंस्टाग्राम खोल दियंता ना ऊपर देखु से सोशल मीडिया से किसी कनेक्शन नहीं राइट आ तुम मैंने सोशल मीडिया अच्छो ना नहीं गुड गर्ल टिके था सोशल मीडिया रे सोशल मीडिया माने ये नुह इंस्टाग्राम कहूनी मा प्रोफेशनल सोशल मीडिया जमती लिंक्डइन रे था तमरी भलिया पिला जो मैंने प्रिपेयर करछंती से माने भी लिंक्डइन रे थांती तांका संगे आईडिया एक्सचेंज करी हे परिबो किंबा आउ सब गोटे गोटे प्लेटफॉर्म अछि जोटी तमरी भलिया प्रिपेयर करथो जो लोक तांका संगे माने कथा एक्सचेंज हे परिबो सेटा ठीक टेलीग्राम नुह टेलीग्राम रे कोन कोन कथा एक्सचेंज होची मु भी बुझी परनी किंतु जदि कौन टेलीग्राम चैनल तुमको लगुच हाँ भल कंटेंट अच्छी तुम संगे डेफिनेटली पार्टिसिपेट कर अन्य मैंने कौन भाव जान है तो से जहाँ भी हो खुश तो बहुत चीज बोल के चला गया है नेक्स्ट याद एटा बुझीगला बुझीगला समस्ते जोड़े बही कहली को बही कहली द आर्ट ऑफ वार आउ चाणक्य नीति है जदि बुझीला भल जदि न बुझेले एआई को पचारिबनी मनीष जी थिबो ताकू पचारिबो तुम किए तो गोटे थी जी बुझे पार तुम पाखापाखि तुम निजे निजे डिस्कसन कर ऑटोमेटिकली बुझ निज निज भीतर डिस्कसन कले भी भल के बुझीपार ना आमको पचार कि तुम घर जदि किए अच्छा हेल्प करेंगे बुझे पारे पचार एआई को पचार ना डेफिनेटली गूगल को तो बिल्कुल पचार नहीं सी कह कि चाणक्य कैंसर हो गला गूगल को किसी भी पचार से कह कैंसर हो लास्ट से बुले बुले कैंसर रोग केमती नहीं पड़े आसे मुझे बुझीपार है हौ छाड़ आर्ट ऑफ वार चाणक्य नीति वेरी गुड आउ जहाँ जहाँ बही दरकार पड़े मु गोटे गोटे कही जाउथि तुम आगे एतिकी सारल मु अच्छा हु मूव्ड माय चीज विषय कहितले बहीटा एटा गोटे जो माने एग्जाम पय प्रिपेयर करंती मु तांको रेकमेंड करे हु मूव्ड माय चीज छोट बहीटे मैक्सिमम 45 पेज थियो तादरे एडी रे पतला बहीटे हैला हु मूव्ड माय चीज CHEESE चीज आ छेना छेनाडी आ मु जाने आ तो छेना लागे पोड़ो छेना पोड़ो कंडेंस्ड मिल्क ये जानला मु मु तो से कोन से एडा दियंती एडे पिठा एडा सेडा कोन हां ता धरे करी दियंती काई ता खाई कोन लागे तुम मैंने खाई छ ना हाँ खा एक्सपीरियंस हम आगु जाए से ही मिल तुम मन को तुम जुआड़े जीव तुम तुम आगे नियंतु पिठा खाते सॉरी कौन पिज्जा खातु खा खाओ माने खाओ खाओ जे माने सी जेमती से पिज्जा गुडा को 300-400 टका दउछ मु भी काई बुझी पनी एडी पिठा को कोन सॉरी एडी पिज्जा को कोन 300-400 टका बड़ पिठा ठीक है ठीक पिला औ हैला एथरा बुझिए लगा हमें आगु बढ़िया क्वेश्चन उडा टिके सॉल्व करिया हां प्रथम क्वेश्चन होची अकॉर्डिंग टू द पैराग्राफ व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग हरे तमे बुझी गलो देखो केते फास्ट तमरा आंसर सॉल्व होची हैला कोन होला यार ओ कॉमन पिटफॉल मेंशन्ड इन द पैसेज इज भगवान सेटलिंग ऑन द फर्स्ट सॉल्यूशन दैट कम्स टू माइंड लिखा है राइट ही हा 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 राइट बा a common pitfall is to rush towards the solution without fully understanding the underlying issue which can lead to threatening once the problem is defined कहां पर अछि defining begins with clearly defining the problem first जा से ताकू न करी कि तमे कहयो हाँ हेला जनरेटिंग 2 मिनट अच्छा
What is the final and often overlooked step in the problem solving cycle? Reviewing. देखिए देखिए कौन 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 हाँ बी 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 अच्छा हाँ बी 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 समझ बी 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 हो हाँ ठीक अच्छी वेरी गुड बी 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 इधर कौन अच्छी रिव्यूइंग द रिजल्ट ऑफ द इम्प्लीमेंटेड सॉल्यूशन करेक्ट बी जो मैंने लिखुछ ठीक जो मैंने ये पूरा पढ़िल सी भी ठीक जो मैंने न पढ़ी स्माइल कर से मैंने भी ठीक है एमती चाहनी मैं आंसर गुड़ा पर फोकस करो मु आड़ कहीं चाहिए प्लीज याद चाहो तुम जन चाहो जो मत निजे डर मार कौन करदेली अच्छा द इवैल्यूएशन ऑफ पोटेंशियल सॉल्यूशन को बुझ पारलो पोटेंशियल सॉल्यूशन शुड बी बेस्ड ऑन criteria such as feasibility and impact, how quickly they can be implemented, personal feeling and biases, the solution's popularity among the team members. कौन C अच्छा आंसर हो गला हल गोटे क्वेश्चन एटा केबे कोठी हला बळिया लागुच की एग्जांपल दे परियो द सॉल्यूशंस पॉपुलैरिटी अमंग द टीम मेंबर्स कोठी हुए एटा हबा कथा नुह किंतु माने एग्जैक्टली सेम जिंस नुह हां ना इंसिडेंस नो माने एग्जैक्टली सेम जिंस नो किंतु एई भलिया ही हुए करेक्ट आम वोटिंग ये नेता कितने पॉपुलर देखिए प्राय साउथ रे भी बहुत प्रोमिनेंट थिला एबे अछि कि नै मु जानिनी किन प्रोमिनेंट थिला जदि कोनोसी अभिनेता नेता हुंती तांको ऊपर बहुत तांको बहुत प्रशंसा तांकर हुए और तांको वोट बहुत मिले एटा आगुर थिला एबे होछि कि नै मु जानिनी मु एबे साउथ पॉलिटिक्स ऊपर विशेष इंटरेस्टेड नाही डाइनिंग द प्रॉब्लम डाइनिंग द कौन मा कमला साहू अच्छा डिनाइंग द प्रॉब्लम अच्छा 60 सी जीडी अच्छा जीडी हाँ ठीक अच्छे डन नाउ केड़ा छोटो गोटे थिला पैसेज टे आ गोटे छोटो पैसेज माने मुंड आज गला खराब छोटो छोटो पैसेज जदि एमिति होची भाबो जदि मु गोटे पूरा फुल पैसेज नै गेसी कोन हबो एटा होची सुनंदा ऑफर्स टू हेल्प रविंद्र debug the issue मैं लिखि दउची ना एटा जूम आउट होउनी बा केमिति कोन दे जूम आउट आ त मु जणा छी केम जूम आउट हुए एटा ना बाबा ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड जिंस एगो जूम आउट जूम इन कला तो क्वेश्चन कोडे पड़ेथियो काई एते ये करबा हाथ अछि लिखि दे पारुची लिखि दउची कोन अछि एटा लिखा है जी सुनंदा offers to अच्छा हाँ मो हैंडराइटिंग खराब पा मु भूल जाइतली सुनंदा offers to help रविंद्र debug the issue ए पैसेज जिते इंपोर्टेंट नो या तर जो क्वेश्चन गुड़ा আছে সেটা বেশি ইম্পর্টেন্ট in sports also based on experience हाँ सत्य ठीक कहते स्पोर्ट्स ऑल्सो बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस हाँ जो पॉपुलर सेटा ही हमें ये करो गुड debug
DEBUG, debug. Unforeseen. अच्छा. What is the cluster? है? एक दुई. Oh, flustered. अच्छा, flustered. अच्छा हाँ. कौन? कोड़े कोड़े? हाँ. प्रथम. नाडा. P टा कैपिटल अच्छे तो प्रोजेक्ट नाडा. प्रथम. Interjects. हाँ. प्रकृतिर वर्ड गुड़ा बुझी पारनो ना जो वर्ड गुड़ा खराब देखा होची ताको अंडरलाइन कर दोचो. ताहले ठीक अछि. सत्य प्रकाश पाणी कहउचंती. My interpretation is the statement shows a fostering environment where the team lead or manager emphasis everyone should speak freely and express their idea without any hesitation, also which will lead a greater team collaboration in future. A very interesting and a very positive statement, I would say, but I don't think it has directly approached this, but yes, somewhat it is related to that. Interjects, हाँ. ଆଉ କଣ? ଆଉ କିଛି? ଏଠି ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ଅଛି ସୁନନ୍ଦା, ଅଭିଳାଷ. अच्छा, there are very simple words over here, किंतु से मैंने जिंदगी use करा है ची, that kind of slightly changes the meaning of the words, slightly, not completely, but slightly. जेमते इट जनरल डॉक्यूमेंटेशन. या अर्थ कौन? No, you know what is a general documentation? केते जण मोबाइल किनिछ? मोबाइल केते जण निजे किनिछ? अनबॉक्सिंग केते जण निजे करछ? करछडी? जेतल तुम निजे अनबॉक्सिंग कर ता भीतर गोटे माने गोटे पेपर खंडे बाहरे एते खंडे गप मैनुअल जनरल डॉक्यूमेंटेशन है से कहती निजे मोबाइल किणी निजे अनबॉक्सिंग करो शिखियो किसी गोटे नुआ जिन ना. अच्छा कहा कहार से जो कौन से फोन टा रे आईफोन हाँ कहार कहार अच्छी नहीं कहार हाँ आगु किणु एडा केते जानछ? हाँ केते मु को जानछ एतर कोन हद कोन केते कोन केते हेतु एडा 12,000. prompts कोड जी. हाँ एडा prompts. हाँ prompts आमरा भाई से कौन से जो 60,000 जिनसटा कहलो सेटा कौन करू हम नहीं देखो फोटो उठेबू क्लास भीतर बसी क्या फोटो उठेबू तुम जब कह ए फोटो उठेले भल सुंदर आसो आउ को वर्ड बड़ा बुझीओनी कह एटी आम ऑनलाइन क्लास नौ मुझे ऑनलाइन पिला फोटो उठेबी केमती आसो खाली ना गुड़ा आसो. go debug
एटा मु लिखछि अच्छा आउ किछि सब बुझी गेलो बाकी सब बुझी गेलो तो वेरी गुड या द्वारा आई थिंक मोर जति मन पड़ी और मात्र जोड़िए क्वेश्चन अछि मैं आगे बुझी दोछि वर्ड्स रो मीनिंग आ त क्वेश्चन तापर देखि देबा किछि डिफिकल्ट नो अच्छा प्रथम होची से प्रोजेक्ट रो ना से कुछ अनफोर्सीन अच्छा एथरो फास्ट करिया सीन सीन माने देखा जाउथवा फोर माने देखो BEFORE फोर फोर आगुआ आगुआ देखा जाउथवा फोर्सीन माने आगुरु जना पड़ जाउथवा अनफोर्सीन माने आगुरु जना पड़ू नथिबा ठीक अछि अनफोर्सीन टेक्निकल कॉम्प्लिकेशन माने जो टेक्निकल कॉम्प्लिकेशन को से माने आगुतुरा देखि पानथले कि जानि पानथले जा विषय से भलिया सिचुएशन हेछि एठी ओके आउ होची अच्छा देखो एटा ए जो वर्ड फ्लस्टर्ड कोठी यूज हेछि द रविंदर इज while Ravinder is explaining the issue he seems flustered avoiding eye contact with Arati and speaking in a low voice both of them are talking about low confidence a joda ko dekhe you can see that it is talking about low confidence right so flustered kon dibo it must be related to low confidence right अच्छा जदि गोटे लोक धीरे धीरे कहूची आखि आखि मिसई न कहूची आउ कोन हेते पारे नर्वस हो तो नर्वस हेतले कोन हो तो मुंह लाल पड़ जाइतो झाळेई जाइतो all those things is called flustered he seems nervous flustered माने पूरा फ्लश हे गेला तो देव रक्त सुखी गेला वाला काइंड ऑफ ताबरे अवॉइडिंग आई कांटेक्ट आरती को से देखुनी and speaking in low voice है आउ कोन interjects as he finishes ए देखो किन लगा as he finishes his colleague Abhilash immediately interjects अच्छा जदि एटा न बुझ पाछो एई स्टेटमेंट टी पढिलो या अर्थ कोन कहूची the problem is that Ravindra did not read the documentation properly the instructions for the module for that module are very clear एटा टिके ओडिया ट्रांसलेट करो कोन कहूची वेरी गुड किंतु जो टोन ने कहै से टोन ने टिके ट्रांसलेट करो कारण गोटे मीटिंग चलची धरो ए मीटिंग रे मु होची रविंद्र ये होचंदे आरती नै थो तमे होच आरती हला त मु तांको देखि कथा हूं मु मुहटा पूरा ये जाईची सही टाइम रे हमर जने भाई ना अछन कोन ना अभिलाष अभिलाष से कहले से कोन कहले द प्रॉब्लम इज रविंद्र डिड नॉट रीड द डॉक्यूमेंट प्रॉपर्ली से कोन कहदे आया रविंद्र मते डॉक्यूमेंट पढ़ी ना एन कहदिबे इंटरजेक्ट रो अर्थ होची माने सेठी काटिला कथाटा काटिकी कहला मझरे पसई कहला कि देखो ना आया सब ठीक ठाक लिखा है भाई पढ़ीनी हला एही टोन ने कह दियो कि ना कोट कह दियो मझरे काटिकी कहला कि से जंती देखला माने से कहू नाही बहुत प्रॉब्लम अछि मु ये करि पारुनी से संग संग साइड भीतर पसई गेला सब ठीक ठाक लिखा है कि भाई ना पढ़नी हो अभिलाष पढ़ीनी अभिलाष hasn't read it हला इंटरप्ट माने मु कहूची तमे मझरे कह माने मते कहलो स्टॉप कर देलो इंटरजेक्ट माने मझरे पसिकी कहला हां क्रॉस करी कहला जेमिति मु कहूची तमे हठात मझरे कोन निज ओपिनियन स्टार्ट कर देलो हैला निज ओपिनियन स्टार्ट कर देलो मु किंतु सारीनी तमे निज ओपिनियन स्टार्ट कर देलो सेटा होची इंटरप्ट हैला मु गोटे सेंटेंस सारिली अधा कहिची किंतु ता पर आउरी कहयर अछि किंतु ता मझरे पसिकी तमे किछ गोटे ओपिनियन कहि रही गलो सेटा होची इंटरजेक्ट ओके अच्छा हैला दबर असला अनदर टीम मेंबर सुनंदा notices Ravindra's discomfort and calmly asks Abhilash सुनंदा जी अछंती से रविलास को पचारले अभिलाष के जे एई इंटरजेक्ट करतले
Did you have a chance to look at Ravindra's specific code, or are you basing that on the general documentation? माने जहाँ लिखा है तमे से हिसाब रे कहूच ना तमे रविंद्र रो कोड देखिच. ओके अरे ये पूरा जिनस रे बेसिस किछि बुझियार अछि किछि नै गोटे सिंपली जाननियार अछि गोटे meeting होय. There's a meeting that's going on there. It seems that the meeting is on for a particular update on Pratham project अछि. Ravindra is the junior team member. Aarti is the reporting authority, I think. She is the reporting authority. जहाँ को report करा होगा. Project manager. So Ravindra is talking to his senior Aarti. He is not maintaining eye contact, and in between Mr. Abhilash is trying to take the credit by saying that Ravindra has not done his work. Then another woman or another teammate Sunanda is trying to pacify the entire situation by just giving an opinion calmly or asking a question calmly. That's it. This prompts for more constructive discussion where Sunanda offers to help Ravindra debug the issue. Means debug mane bug mane कौन problem, debug mane removing the bug है तो solving the problem. एटा गोटे debug is a software based word माने software संगे related word जोटा कहते problem solving, clearing out the problem को debug कहते. So कहला कि the way the Sunanda said it sounded very constructive माने भलो भलो है से through she offered to help Ravindra solve the issue है. So that is the entire thing. I don't think there is anything more to discuss. It's a very plain and simple thing. Now the question, what did Sunanda demonstrate by asking Abhilash a clarifying question and offering to help Ravindra? Empathy and active listening by recognizing Ravindra's distress and steering the conversation towards collaborative problem solving. अच्छा, okay, अच्छा, leadership क्या है वनी? Why not? Leadership by taking charge and solving the technical problem herself. Why not? She did. A leader is one who pacifies the situation, right? She did that, right? So why A cannot be an answer? B, a lack of objectivity by siding with Ravindra against Abhilash. Obviously it is a negative statement, so you can eliminate this. Take a check, we get it. But I have my question, why A cannot be an answer and C you said is to be an answer. So maybe C is the answer. D, a systematic communication style by focusing only on the technical facts of the issue. Was it this? It is an answer because this also happened. So why are you choosing one over the other two? Sunita is right. She is just a team member. Okay. And she did not solve the technical problem herself. She offered to help Ravindra. That's why this cannot be the answer. Now the question remains between C and D. Which one should be the answer? Most of you are saying C. But my question is, if I have to eliminate D, based on what I will eliminate? I know it is C. Everybody wants it to be C. Even I also agree that it is C. But I want to know why you eliminated D. Not technical fact. Sekongo ji, a systematic communication style. Is it a systematic communication style? She saw that Ravindra was discomfort. By focusing only on the technical facts of the issue,
Did she focus on the technical facts of the issue only, or did she ask a question which was more of a problem, more of a solution to the discussion? So that's a technical factor पर कही नहीं ना. She just raised a question based for the purpose of solving the problem. ठीक है जी. So because she was not talking about only about the technical fact, she was asking for a clarification. So D is not the answer, and you all are right because you all said it is C. She just tried to solve the issue and the situation. Very good, Sunita. And Smaraki, no, it is not systematic, and other thing is it not only based on issue. Very good, Smaraki. And Kapura, D is only technical issue. Good, good, good. So everyone is right because you all chose C. Which of the following best describes Abhilash's communication style and its effect on the team dynamic? Aggressive माने में जोड़ा तुम्हें बिल्कुल न हो. रागी. No. Aggressive does not mean रागी. Aggressive is a emotional, hyper emotional state. ठीक हो जी, but not always रागी. Ragiba is aggressive, but not aggressive is not always Ragiba. Okay, assertive अर्थ माने जदि एठी आउ किछि वर्ड थांदा जोटा तुम बुझि पार न थंदो ताल तो तुम आउ किछि मार दे थंदो. assertive अर्थ कोन? When you say assertive, what does it mean? अच्छा किए एठी लिखिछंती D is only okay, Smaraki D A means लिखिबे D. यार 75 आंसर समझ D दउछथि पैसिव एग्रेसिव. अच्छा राइट. अच्छा ठीक अछि. असर्टिव अर्थ कोन? बुझुछ D. Now you are being assertive. जो मुंडा हलेलो नी, that is called being assertive. मुंडा काई कलेलो? तुमने agree कलो. You agreed. मु बुझली. तुम बुझछटी. You agreed कि तुम बुझुछो. तो मुंडा हलेलो. So that is called being assertive. Agreeing. अच्छा aggressive माने forceful. Aggressive माने forceful माने emotionally not very माने हाँ hyper emotion माने अति emotional है कि कुछ छोड़े कर दो. That is being aggressive. Take without considering others emotion, you do something, that is called being aggressive. Systematic, step by step you do the thing. Passive aggressive, assertive means confidently also, correct. अच्छा passive aggressive हाँ ठीक वो आंसर जोड़ा कोच रखो ठीक थी वो. इनडायरेक्टली कहो तो पैसिव एग्रेसिव माने डायरेक्टली एग्रेसिव नो माने इनडायरेक्टली टिके ये हर्ट करथो हैला. आम जो सेंटेंस थिला तादरे से लुचे यांकू हर्ट करथिले कागो रविंद्र को से लुचे हर्ट करथिले माने कोन करथिले से जाई की आरती कान रे कहि देथिले इंटरजेक्ट कले. जदि से पछरे कहि थांते कि एमिति किछि कहि थांते जोते कि रविंद्र फीलिंग हर्ट है न थांता. आ जब रविंद्र फीलिंग हर्ट है न थांता तले हम सुनंदा कहि तादरे मुंडो खेले थांते. Understood? So it's not passive aggressive, it is active aggressive, it is aggressive, it is aggression, not systematic, not passive, not assertive. Got it? Same thing कह दी
एटा को टिके निजे ओडिया रे करी कहलो या केमिति कहउतबे व्हाट इज द टोन दिस इज द टोन इज aggressive understood you understood though why it is aggressive you were right not passive aggressive जो मैंने भी डी लिखी थी I think they should be clear by now that it is not aggressive हाँ indirect forceful direct indirectly showing the aggression good very good the answer should be B अच्छा आ गोटे अछि अच्छा I forgot what is written over there हाँ एटा भी गोटे केस स्टडी बेस अछि पढ़ो we have enough time फटाफट सॉल्व I don't think so there will be a problem मु देखे तळे कोन टर्म वैल्यूज बोले लिखा है लॉन्ग टर्म वैल्यूज हाँ 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 तळे होतला बोले लॉन्ग टर्म वैल्यूज long term values पढ़ा पढ़ी स्टार्ट करो माने अलग अलग सोर्स को देखो हेले your mental acuity will improve the flexibility that you require to solve these kind of questions it will improve एते ये लागिवनी चलो आगे देखो लास्ट ईयर PQ जो देखु छेबे see how easy the questions were क्वेश्चन गुड़ा कौन डिफिकल्ट थिला तथापि पिला भूल करके आछन ना पैसिव एग्रेसिव लिखि आछथे ना डन अच्छा okay so what is this about कौन डिस्कशन हो चेटी ये कहबे PYQ डिस्कशन हो ची लो प्राइस वर्सेस क्वालिटी सर्विस एठी के इंटरप्रिटेशन ये दउथले कोड गले अगर इंटरप्रिटेशन वाला बढ़े दिला पड़ गले सत्य प्रकाश पाणी से इंटरप्रिटेशन दउथले से लिखु चंदी बोले अच्छा क्वालिटी वर्सेस सर्विस वर्सेस वन अगेंस्ट comparison is different yeah. तो ये पूरा this entire passage is about what now you get it so a senior marketing manager Samita is negotiating a new contract with a long standing client माने कौन long standing client माने long standing client माने पुराना client in sense like the good client long standing client माने good client पुराना and good a retail chain अच्छा with a long standing client a retail chain ताका जो client जो है retail chain अर्थ कौन example of a retail chain
malls no retail chain go mall रे retail chain गुड़ा थांती which one is a retail chain no ma not daily basis are everybody goes to this retail chain you buy your clothes over there you buy your shoes over there what are give me at least one name for a retail chain anybody online who can give me a name of a retail chain अकस्मारकी देखो जल्दी according to my interpretation it's basically a business discussion they discuss about the long term I will agree with you Smarki but partially not completely marketing skill good marketing basically negotiation yes values for a business okay good acha oh what is it अरे give me an example of a retail chain तुम बैठो भूल रहे भी जहाँ रहे हो सेटा ठीक Tell me a name of a company. हे भगवान को कौन को ए देखो ना रिटेल चेन को कोका कोला जोड़ा रिटेल चेन सही गुड़ा ही कहलो हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड हाँ सेटा काइंड ऑफ एफएमसीजी रो ये किंतु सेटा रिटेल चेन नुह रिटेल अर्थ कौन खुचरा आम रिटेल शॉप माने कौन किराना शॉप को आम रिटेल शॉप कहूँ टी सी कहूँ से जो देखो आशीर्वाद अट्टा किराना शॉप रे मिले रिटेल शॉप रो रिटेल चेन माने गोटे प्रकार शॉप जोटा सबु जगह बिक्री करे जो माने कि कस्टमर संगे कनेक्ट होती माने जन किराना शॉप रे आमे जाके किणु आमे सेटु किणु आमे आशीर्वाद अट्टा रु किणुनी आमे से दुकान रु किणु से कहूँ गोटे एमती दुकान ना कह जो जाके आमे किणु आ सेई ना रे 50 टा दुकान थिबे टाइटल रिलायंस विशाल मेगा मार्ट आ गोटे कौन सब अच्छी अरे विशाल मेगा मार्ट मॉल हे भगवान अच्छा बाबू सुनो कि क्यों मान को लगुच विशाल मेगा मार्ट मॉल बोली ना ना जनरली कहबनी तमे ये स्टेज को आसी जनरली भूल कहबनी हाँ मॉल मल्टीपल रिटेल में माने तमे से जो कौन सेटा अछि हमरो एस्प्लेनेड सेटा होची मॉल ओके सेटा होची मॉल सेठी रिटेल शॉप जिते दुकान अच्छे सब गुड़ा रिटेल चेन इवन द जितक फूड कोर्ट रे जितक शॉप अच्छे सब तक रिटेल चेन है से गुड़ा हूँ रिटेल चेन आ से जो हाउस करे ताको हमें कहू मॉल है सो सेटा हूँ रिटेल चेन द क्लाइंट इज पुशिंग फॉर अ 15% डिस्काउंट साइटिंग बजट कंस्ट्रेंट व्हाइल स्मिता's टीम कैन only feasibly offer 5% discount without sacrificing the quality of the service. तो माने 5% डिस्काउंट ही मैक्सिमम दे परिबे तांको क्वालिटी मेंटेन करे अछि 5% डिस्काउंट ही दे परिबे किंतु क्लाइंट चाहू के रिटेल चेन चाहू कि से 15% डिस्काउंट दियंतु कि से चाहू 15%. During the negotiation the client's representative जीवन भगवान okay mentions a competitor's lower price multiple times framing it as a non-negotiable benchmark. ता माने कौन है जीवन कहउचंती कि यांकर कंप्यूटर स्मिता जो ये रछंती तांकर जने कंप्यूटर अछनी से लो प्राइसिंग दे दउचंती ओके सेटा को से बारंबार कहउची जोति पई कि ता अर्थ से कुछ फ्रेम करूची त माने से कहय को चाहूची कि से जो 15% मागुची नॉन नेगोशिएबल से कहउची अन्य जने दउचंती तमे दउनो सो से बारंबार से जिनिस कहउची Smita listens patiently, acknowledging Jiban's concern about budget. है से स्मिता शुणुचंदी से कहउचंदी हां तमे जो बजट विषय कहउछ सेटा ठीक कहउचंदी. Instead of directly debating the competitor's price, she shifts the focus by detailing the unique high quality service and strategic value her company provides that the competitor cannot match. से प्राइस ऊपर न फोकस करेगी से फोकस करछन तांको क्वालिटी ऊपर जोटा कि कंपटीटर केबे प्रोवाइड करी पारिबो नाही.
This is when you will read Art of War, you will understand this. Eta kon hela. In Art of War, this is written. Mane eta kemiti ko kahi ki eta hela? Why did she do it? The tactics behind this, you when you read the book Art of the War, you will understand. Kahi kemiti kola. Acha. She presents a creative tried solution. Acha, tried solution mane kono? हाँ solution Wellspun Wells Homes, very good. Tata, Tanish, Reliance Trends, Tata Westside, Jio Mart, Aditya Birla, very good. Groceries are very good. কিন্তু বড় বড় সব এক্সাম্পল এটি অଛନ୍ତି কেই ଗୋଟେ ତମ ଭିତରୁ କହିଲନି କଣ ଚାଟ୍ ଜିପିଟି ସେମାନେ ଚାଟ୍ ଜିପିଟି କରୁଥିବେ ए स्टेज रे कि चैट जीपीटी रो रिस्क नेबेनी कारण से जते कि चैट जीपीटी विल प्रोवाइड यू सो मच हैलुसिनेटेड इंफॉर्मेशन थरे जदि तुम चैट जीपीटी रे एडिक्टेड हे गलो यू विल नेवर क्लियर योर इंटरव्यू गारंटी दे गोची कारण से चैट जीपीटी प्रोवाइड्स हैलुसिनेटेड इंफॉर्मेशन माने ताकू जोडा ठीक लागियो से सेडा कहबो गोटे एग्जांपल देउतले मु चैट जीपीटी रो कहूची गोटे बे सोशल मीडिया चली छी इवन तुम जदि चाहिबो टेस्ट करि परियो मे बी इट विल वर्क कि से रेक्टिफाई भी कर दे पारती से थोड़े गोटे चैट जीपीटी पचारा कि मो घर ठू 150 मीटर दूर रे मोर कार वाशटा अच्छी है मत मो कार धोयार अच्छी तो मु से जो कार वाश को चलिक जीवी ना कार जीवी आंसर कौन आसला कहल चलिक जाओ गले तुम देह भल रहा दिस इज hallucinating सी तम हिसाब से तुमको बेटर करने चलती सी तुम रिक्वायरमेंट गुड़ा से बुझी पाने सो देयर इज अ लॉट ऑफ टाइम इट विल गिव यू रॉन्ग इन्फॉर्मेशन चोल साम्राज्य और चालुक्य साम्राज्य भीतर डिफरेंशिएट कर पारुनी माने बहुत टाइम भूल कर दूची या ना ता संगे ता ना या संगे मिक्स कर दूची सो बी केयरफुल ओके बेस्ट होची बुक्स गो बाय बुक्स अच्छा से ट्राइड सॉल्यूशन माने कोन Okay. कौन लिख ली सुनीता how we go back from class and find then and it's took so many time अच्छा fine correct you're also right she's right they can't use chat gpt anyway चलो को tried solution माने कौन tried and tested माने एटा सुनी छ ना ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड्स माने कोन माने एटा काम करछ ऑलरेडी एटा को हम ट्राई करछ एटा काम करछ सेया कोछि ट्राइड सॉल्यूशन माने एमिति कोटे सॉल्यूशन एटा ऑलरेडी थरे काम आगुरु काम करूची ए भलिया ट्राई करा हेछि आ एटा कोटे काम भी करछ सेटा होछि ट्राइड सॉल्यूशन where the client can receive a 10% discount in exchange for a long-term 2-year contract which ensures a company's stability and offers the client more long-term value. तो सीए को जो ट्राइड गोटे अल्टरनेटिव देले आमे को जो 5 तमे को जो 15 let us settle down in 10 किंतु you will have to do a contract for us for at least 2 years जोतर कि आमे भी स्टेबल रहिलु आ तमको भी वैल्यू मिलिला राइट सो ये गोटे सी यू माने गोटे सॉल्यूशन से देछन गॉट इट क्लियर एनीथिंग एल्स नो before we tried and it did this correct very good Smarak acha the question is by offering a tried solution with a long term contract what did Sunita effectively do ठीक है बिजनेस लैंग्वेज यूज हुई चिठी देखो कहीं कारण से सब बड़ा
What is the answer for this one? 76. C. କାହିଁକି ମା ଲାଗିଲା କଣ ଭୋକ ହେଇଛି ମା ଲାଗିଲା ଆମେ ଏବେ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସଲଭିଂ ବିଷୟରେ କଥା ହେଲେ ତାପରେ ହଁ ମା ଆଲୋ ମା ଏତିକି ପଢୁନ ୱିନ୍ ୱିନ୍ ଆପ୍ରୋଚ ମାନେ କଣ ୱିନ୍ ୱିନ୍ ଆପ୍ରୋଚ ମାନେ କଣ ଧର ତମର ମୋର ଗୋଟେ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ଚାଲିଛି ନେଗୋସିएशन ଚାଲିଛି ଗୋଟେ ଏମିତି ସଲ୍ୟୁशन ଯୋଉଥିରେ ତମର ବି फायदा ହବ ମୋର ବି फायदा ହବ ସେଇଟା ହଉଛି ୱିନ୍ ୱିନ୍ ସଲ୍ୟୁशन तो सी तो से लास्ट कले ना 10% मु माने अति बेसी रे 10% दे परो 2 वर्ष तमे हम संग तमर भी फायदा मोर भी फायदा सो दैट इज व्हाई सी ए रे कोन देखो showed a lack of confidence बिल्कुल नु there was no negative tone तो नु prioritized her company's need ना से निजो कंपनी नीड को ऊपर किछि बिल्कुल फोकस करना कारण से लास्ट को जंदी वी विल सेट इट डाउन विथ 10% नु D made a strategic error पुणी नेगेटिव टोन आसीगला तामाने एटा भी हबनी जन खाली सेति देख दो खाली देखो नेगेटिव टोन तीनटा अछि गोटे अगर मतलब पॉजिटिव टोन अछि आंसर आसीगला गॉट इट even if you don't read the entire thing you don't understand look for tones also even with tones you can also answer बुझियो जी अच्छा which negotiation strategy did Samita primarily use to overcome the impasse माने stand still माने कोन ये कहउछन 5% देई परिबा से कहउछन हमको 15% दरकार से जो impasse माने at a point where they are not able to go to a decision that is called an impasse created by the competitors low price जेतु से कोन लगे 12 मास को competitor low price तमे दोनो से जो impasse ता करेगो से which negotiation strategy she used C. She did give a close to the client's demand ना देई चंदी client 15 को उतले से 10 देले सेटा भी तो देई चंदी why not A अच्छा ठीक है let's go for C company खुश client खुश very good अच्छा D adopting an aggressive stance by directly challenging the competitor's value there is again directly challenging tone it change there was nothing negative over there so this will not be D रे compromising again negative tone na eta hoboni we are left with A and C से तो client रो जहा demand ला ताटू close देछ ना C को reframing the value proposition to shift the focus from price to unique benefits and long term partnership किंतु से परसेंटेज रे जोडला से क्लाइंट बैंक पाखा पाखी भी अछि ताले मु काहे किसी चूज करबी ए काहे चूज करबी यस वेरी गुड एमओयू तो नो माने कॉन्ट्रैक्ट तले अच्छा मेकिंग अ कंसेशन बाय ऑफरिंग अ डिस्काउंट सी कंसेशन डिस्काउंट दे कि से करनो थिले she made a concession based on a long term value so only because of that A will be eliminated and C is the answer is it clear everybody clear C aggressive thile no and C कोनसे से compromise करथिले I think this was the last one so finish this is it we are done for the class वाह exactly 9 टा सरी गला एना समस्त घर को जिवे रोटी खाई की रोटी संतुला खाई के से गुडीबे राइट अच्छा जो बही गुड़ा कहली से बही गुड़ा खोज न जानले सार को पचार सार को कहबो जदी न पाउछो सार को कहबो सार मते टेक्स्ट करिए मो पाके से बही गुड़ार सॉफ्ट कॉपी अछि मु पठै देबी किछि नले सॉफ्ट कॉपी रो पढो भलो रहयो गुड वेरी इंप्रेसिव बुक्स तीनटा बही कहली बोदा जी तीनटा कहली गोटे छोटो बहीटे कहली हु मूव्ड माय चीज
एटा कौन कहलो एग्जाम माइंडसेट पाई खाली एग्जाम माइंडसेट लाइफ माइंडसेट पाई जब यूज करि पारलो बट एग्जाम माइंडसेट पाई जो लगे फ्रस्ट्रेटेड लगे अरे कहीं होनी कम के होनी कौन होनी केमिति को टाइम रे स्ट्रेटजी चेंज करिया था से सब माइंडसेट पाई होची हु मूव्ड माय चीज जदि चाहिबो सेटा पढो भलो बहिडे एंड सेकंड आउच आर्ट ऑफ वार फॉर योर नॉलेज फॉर योर स्ट्रेटजीज एंड ऑल एंड तापर होची द चाणक्य नीति एंड बिकॉज पीपल आर टॉकिंग अबाउट इट ठीक अछि जदि न